Hello students, today we will study the property of additive identity and additive inverse in this video. So let's start understanding what is the additive identity and what is an additive inverse. Okay, so to start with, we will first study the role of zero. अब रोल ऑफ ज़ीरो के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होल नंबर से, बिकॉज दैट्स द सेट वेयर वी गेट द ज़ीरो फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो क्योंकि इन नेचुरल नंबर्स में तो ज़ीरो होता ही नहीं है, तो होल नंबर से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट हैपन इफ़ आई ऐड ज़ीरो टू अ नंबर. अगर मैं किसी नंबर के अंदर ज़ीरो ऐड करती हूँ तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है नंबर पे. So let's take some examples from here. It is 2 plus 0 is equal to 0 plus 2. Why am I doing it? Because the addition should be from both the side. Example दे देती हूँ क्यों ज़रूरी है ये. Like if I do 2 minus 0, I will not get the same result if I do 0 minus 2. So the property has to be tested by placing 0 at the second place as well as at the first place. तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि दो दो बार क्यों निकाल रहे हैं, बट ये ज़रूरी है. सो 2 प्लस 0 आई एम गेटिंग 2 एंड 0 प्लस 2 आई एम गेटिंग 2. सो दैट मीन्स इफ आई ऐड 0 टू अ होल नंबर आई एम गेटिंग द सेम होल नंबर. सेम मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल अंतर नहीं है. सो लेट मी चेक द एडिशन ऑफ 0 टू एन इंटीजर. अभी होल नंबर के लिए चेक करा तो मुझको सेम होल नंबर मिल गया. ओके, नाउ आई चेक फॉर एन इंटीजर. ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स आर लाइक होल नंबर्स, so I will check it for the negative one. If I do minus 5 plus 0, I get minus 5, which I will be getting it same if I do 0 minus 5 in the next order. Okay, again मुझे वही सेम नंबर मिल रहा है, ज़ीरो ऐड करने से नंबर चेंज नहीं हो रहा. So now let me check it on rational number, check it on a bigger set what we are studying. So if I take a rational number, I'm taking a negative rational number because for fractions this property is true. तो negative side ले लेते हैं एक बार. So minus 2 by 7 plus 0 will give me minus 2 by 7 as the answer. And even if I add minus 2 by 7 to 0, ज़ीरो के अंदर माइनस 2 बाई 7 ऐड करूँ या माइनस 2 बाई 7 के अंदर ज़ीरो ऐड करूँ, एट बोथ द प्लेसेस आई एम गेटिंग द आंसर एज द सेम नंबर विच इज़ देयर. तो जब भी नंबर चेंज नहीं होता, दैट मीन्स आई से दैट द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर डज नॉट डिफर. सो व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द नंबर डज नॉट डिफर and there is a plus sign, so this number 0 becomes the additive identity, or you can say the identity of addition. ठीक है, तो identity of addition बोलने में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, so we say it to be the additive identity of the number. So let's underline the definition. 0 is called the identity of the addition of rational number. It is the additive identity for integers and whole numbers as well. ठीक है, तो हमें अभी ये वाली चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है because we are checking on rational numbers. And how do you write the property in the ABC form? You will be writing it. 0 is called the identity for the addition of rational number as, for the definition, you write as a plus 0 is equal to a, which is equal to 0 plus a, where a is your rational number. If you want to be very sure, you can write it as a by b also. Otherwise, a can be sufficient. If you're taking it to a rational number, it has to act in the form of p by q. Okay, तो यहाँ पे भी हमें फिर a by b लिखना पड़ेगा. For any rational number, for any rational number a upon b. So that is my additive identity. Okay, जब हमारे पास additive identity आ गई है तो उसका उल्टा additive inverse भी हम ढूंढ लेते हैं. तो additive inverse क्या होता है? Let's
see through an example. जैसे if I take a number say 2, my additive identity is 0, I get 2, so 0 is my additive identity. Clear? Okay, now I want to add something in 2 that I get 0 as my answer. Obviously it has to be -2. Fine. So when I add a number which makes it 0, 0 add नहीं करना, given number को 0 बना देना है, तो जिस नंबर की मदद से आपका ये 0 बनेगा, that number is called the additive inverse. So we can say in a way that -2 is the additive inverse of 2, or -2 is the negative of 2. Let's take some more example from the book itself. Okay, so this is negative of a number. 1 का negative -1, so that 0 is the answer. 2 का negative -2, so that 0 is the answer. So we say 2 is the negative or the additive inverse of -2, और vice versa. Vice versa का मतलब ये होता है बच्चों कि 2 is the negative of -2 या -2 is the negative of 2, एक ही बात है. तो अगर हम a और a ले लें तो उसका नेगेटिव होगा -a. तो रैशनल नंबर ले लेते हैं कोई 2/3 फॉर्म. इसको ख़त्म करने के लिए मुझे इसी का नेगेटिव चाहिए, सो इट इज़ -2/3. सो व्हेन आई टेक द एलसीएम दे आर लाइक फ्रैक्शंस, द आंसर इज 0. सो वी कैन से, अब वो पूछ रहा है हाउ, ऑब्वियसली इट इज़ 0. नाउ -8/9 के अंदर ऐसी क्या चीज़ ऐड करूं कि वो 0 हो जाए? ऑब्वियसली 8/9, सो दैट दे कैंसिल ईच अदर. बेसिकली अगर आप नंबर लाइन पे समझना चाहें, सो फ्रॉम 0 इफ आई एम टेकिंग 8/9, तो आई हैव टू टेक द इक्वल डिस्टेंस इन द नेगेटिव साइड, तो ये हो जाएगा -8/9. सो व्हेन आई ऐड देम, बिकॉज दे आर एट द इक्वल डिस्टेंस but in the opposite direction, I get the answer as 0. And here also I can write here 8/9, so that I get the answer as 0. Now in -11/7 में ऐसा क्या ऐड करूँ? -11/7 में से नेगेटिव साइन I will pull off, so this will become 11/7. रेसिप्रोकल नहीं करना है इसका, सिर्फ माइनस साइन. If you are seeing the minus sign, just erase it. You get the additive inverse. Okay, so formally we can write a definition. In general, for a rational number a by b, why are we taking a by b? क्योंकि हमारा डिवीजन फॉर्म में होता है रैशनल नंबर मोस्टली. -a by b is the additive inverse of a by b, and a by b is the additive inverse of -a by b. क्यों? क्योंकि हम किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करें, क्योंकि ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, ये आंसर 0 ही देंगे. ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ द एडिटिव इनवर्स फ्रॉम एनसीईआरटी itself. Write the additive inverse of the following. If you see a minus sign, remove it. If you don't have a minus sign, put it. So this is how you get the additive inverse. Additive inverse -7/19, तो नेगेटिव साइड में इतना है, so in the positive side also I need such a number. So 7/19 is the additive inverse of -7/19. Why? Because if I add them, I get 0 as the answer. Same way, if I want to check 21/112, then what will be the additive inverse? इसको इसी के नेगेटिव साइन के साथ ऐड करना है. माइंडेड ओनली 1 नेगेटिव, नो 2 नेगेटिव्स. 2 नेगेटिव हो जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट विल बी -21/12. हाउ कैन वी चेक दैट वेदर
this is true or not? Of course we can check, because I can write it as 21 upon 112 plus minus 21 upon 112, which gives 0 as the answer. Okay, so that's the concept of additive inverse. Let's take some question of NCERT exemplar. Okay, let's see. 0 is, which option will be correct in this one? We like to see 0 is the identity for addition of rational number. It is not for subtraction, multiplication or division. So these three are wrong. A is correct. Then the additive inverse of minus 7 by 19. Minus 7 by 19 ka, it's a, let me take a darker shade. Okay, minus 7 by 19, the additive inverse will be 7 by 19. So which out of this is correct? The B part. Let's move ahead. If x plus 0 equals to 0 plus x equals to x, which is a rational number, then 0 is called what of the number? ये number को change नहीं कर रहा. Is it the inverse? Is it the identity? It has to be identity, क्योंकि ये number को change नहीं कर रहा. So this option is correct. Then let us see some more. Minus of minus x is same as, see, when you have two sign in front of the number, these signs get multiply, and minus into minus gives plus. So B part is correct. Let's take another example. If x is any rational number, x plus 0, what will be x plus 0? If you add the additive identity, it does not change the number. So first our option is correct. So that's it. Okay, one option I need to just make you understand. 0 has dash reciprocal. 0 has no reciprocal. Why? Because 0 को हम लिख सकते हैं 0 upon 1, and the reciprocal, though it comes under multiplicative identity, but here because 0 is also the additive identity, तो 0 के बारे में पता होना चाहिए. 0 को हम कभी भी 0 upon 0 नहीं लिख सकते हैं. It is always 0 upon 1. So if I do the reciprocal, I get 1 upon 0, and division by 0 is not defined. So 0 has no reciprocal. Okay, so I have explained you the concept of additive identity and additive inverse in this video. Please subscribe to our channel for more videos by clicking on the subscribe button below. Also visit our website www.studiestoday.com for free study material like sample papers, solved question papers, worksheet, online test and concept notes made by the teachers of leading schools in India.